Hello friends, welcome to Danlaw. In today's lecture series, we are going to discuss section 312 to section 318 of IPC. So which talks about of the causing miscarriage, injuries to unborn child, of the exposure of infants and of the concealment of birth. So what is miscarriage? So what is miscarriage? Miscarriage is like abortion, okay. So an expulsion of the immature fetus at any time before it reaches to its growth. So an expulsion of immature fetus is like a perception of a man, like any movement in the body of a child, unborn child, okay. So an expulsion of the immature fetus at any time before it reaches to growth. So this is the meaning of the miscarriage. Miscarriage can be done with consent and without consent. So it depends upon with consent and without consent, what are the consequences of with consent and without consent. So here we are going to know what are the consequences of with consent and without consent and what are the punishment under the IPC. Actually we know that miscarriage is illegal in India and having some punishment of miscarriage. So let's read the bare act language of section 312. What is section 312? Section 312 says that like causing miscarriage, whoever voluntarily causes a man with a child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, not caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman, be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, Suppose whoever voluntarily causes a woman with a child to miscarriage, okay. अब कोई बच्चा का miscarriage कर रहा है without the consent, not in a good faith, okay, and for the purpose of saving the life of the woman, here the punishment is of 3 years. In first para, here the punishment is of 3 years, but or with fine or with both, okay, or with fine. But now come to if the woman be quick with child. अब यहाँ पे क्या कर रहा है? Quick with child. What does it mean? Quick with child. Quick with child means like there is a fetus. There is a movement in fetus. Woman feels that there is a movement in fetus. Generally there is like if the child is of 12 week, okay, 12 week. If there is a child who is of a 12 week, suppose, then if woman found that there is a movement in the body of child, so if there is a movement in the fetus, so this is like a presumption of the woman regarding the movement of the body of a child, okay. So this is called the quick with child shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. Here the punishment is 7 years in the case of movement of a child, woman with a quick child. Here the punishment is defined like 7 years. Remember, 7-year punishment and also with fine. And let's read section 313. Section 313 talks about causing miscarriage without woman's consent. Remember, causing miscarriage without woman's consent. So here without woman's consent causing miscarriage means removing the fetus. So whoever commits the offence defined in the last preceding section without the consent of the woman, whether the woman is quick with the child means there is a perception of the woman regarding the movement of the child, okay, that the fetus found some like a movement inside. So I am not a medical student and I cannot define it clearly, but as you know the fetus, if there is a presumption of the woman like there is a movement in the body of a child, okay. Basically it is within 12 weeks it can be done, but 12 to 20 weeks child, if the child is of a 12 to 20 weeks, there is some risk in this case, okay. So come to like here the without the consent of the woman, whether the woman is quick with the child or not, shall be punished with the imprisonment for a life. Here the remember imprisonment for life if there is a no consent, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. Remember, 10 years to imprisonment for life. It can be go for the imprisonment for life, okay, extended to the imprisonment for life. So remember, causing miscarriage without woman's consent, whoever commits the offence defined under the last preceding section without the consent of the woman, okay, without the consent of the woman, then punishment can be extended to life imprisonment from 10 years to life imprisonment. Now come to section 314. So section 314, death caused by act.
done with intent to cause miscarriage. Whoever with intent to cause the miscarriage of a woman with child, miscarriage of a woman with child, miscarriage with woman with child, इसमें क्या है बेसिकली वुमेन प्लस चाइल्ड की डेथ होती है इसमें, और वो डेथ होगी कहीं ना कहीं इसमें इंटेंशन इन्वॉल्व है, ठीक है. सो वुमेन एंड चाइल्ड, सो वुमेन एंड चाइल्ड डेथ विथ इंटेंशन हियर, तो मिसकैरेज प्लस वुमेन डेथ इन्वॉल्व हियर. सो हुएवर विथ इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ द वुमेन विथ चाइल्ड डज any act which causes the death of such woman, causes the death of such woman with miscarriage, okay, shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine. In first para the punishment is of 10 years and also responsible for fine, okay. And you know, if act done with woman's consent, if act done with woman's consent, and if the act is done without the consent of the woman, shall be punished with either description for like with life imprisonment for life, or with the punishment above mentioned. So here the 10 here to imprisonment for life can be extended, okay. Explanation is here, it is not essential to this offense that the offender should know that the act is likely to cause death. It is not essential that offender should know like death is really caused to happen, so this is not necessary, okay. Now come to section, all right, come to section 315. Act done with intent to prevent child being born alive or to cause it to die after birth, means पैदा होने से बच्चों को रोकना, या फिर सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस ये होगा कि पैदा होने के बाद उसको मार देना, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बिंग बॉर्न, मीन्स प्रिवेंट द चाइल्ड, प्रिवेंटिंग ऑफ चाइल्ड बिंग बॉर्न, ओके, अलाइव, और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ इफ देयर इज अ इंटेंशन इन्वॉल्व टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ, और एंड टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ, बच्चे को पैदा होने के बाद उसको मार देना, तो ये भी कहीं ना कहीं सजा होता है. Whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive or causing it to die after its birth, and does by such act prevent the child from being born alive or causes it to die after its birth, shall, if such act being not caused in good faith for the purpose of saving the life of the mother, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, okay, which may extend to 10 years with fine. So here to now come to section 316. Section 316 is causing death of a quick unborn child by act amounting to culpable homicide. As you know, what is the quick unborn child? Quick unborn child, like here the perception of the woman of any movement of the fetus, okay, so it is the quick, okay. So here like whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act causes the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, which may extend to 10 years. तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि कोई ऐसा एक्ट हो जिससे उसके बच्चे को उसके बच्चे को मार दिया जाता है, ठीक है, उसके बच्चे को मार दिया जाता है, मीन्स कॉजिंग डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड. जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई सेड यू बिफोर, लाइक देयर इज अ 12 वीक, इफ देयर इज अ 12 वीक ऑफ चाइल्ड, then it is like all right, like there may be abortion can be done, but if the child is between 12 week to 20 week, okay, so under this case there is a risky, but abortion is legal under some, like there is a it is legal under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में इसको लीगल किया गया है. जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो होता है, MTPA जो एक्ट है 1971 का, तो इसमें लीगल है, प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. अगर जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था सेक्शन 313 में, सेक्शन 313 में क्या बताया था,
सेक्शन 313 में बताया गया था, नाउ कम टू सेक्शन 330 में बताया था कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन कंसेंट, मीन्स प्रेगनेंसी यहाँ पे टर्मिनेट किया जा रहा है बिना कंसेंट का। लेकिन प्रेगनेंसी कई बार टर्मिनेट किया जाता है और वो कई बार वो कहीं ना कहीं इलीगल नहीं होता है, जैसे कि अगर वुमेन के साथ रेप हुआ है या फिर कोई ऐसा गहरा कहीं ना कहीं ग्रेव इंजरी है वुमेन को, तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी को आप टर्मिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 313 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट की बात करता है, जहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। 314 में डेथ कॉज्ड बाई एक्ट डन विथ इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। 315 पढ़ लिया, एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, ओके, बच्चा को पैदा होने से रोकना या फिर पैदा होने के बाद मार देना। 316 में कॉजिंग डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। जाहिर सी बात है, अगर कोई क्विक चाइल्ड है जिसकी फोटोस में मूवमेंट है, तो ऐसे चाइल्ड को मार देना, सो बच्चे को मार दिया जाता है। सो इट इज अमाउंट टू लाइक कल्पेबल होमिसाइड, ओके, इट इज अमाउंट to culpable homicide, and whoever does any act under such circumstances that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. I think all right, I think no problem in this section. Now come to section 317. Section 317 exposure and abandonment of child under 12 years of age, under 12 years of age, okay, by the parents or person having care of it, whoever being the father or mother of a child under the age of 12 years, whoever being father and mother of a child is under the 12 years, okay, under the 12 years, and who is the father, mother or parents, okay, so who is the parents of this child or having the care of such child shall expose or leave such child in any place with intention of wholly abandoning such child. उसको त्याग देना, बच्चों को 12 साल से नीचे का बच्चा है उसको आप फुटपाथ पे रख के चले गए, सो दिस इज अ क्राइम. यू कैन नॉट एक्सपोज द चाइल्ड, you cannot abandon the child under 12 years of age, okay. So here the punishment wholly abandoning such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. Here the punishment is 7 years. अगर आपने अपने बच्चे को अबंडन कर दिया, त्याग दिया है, उसको फुटपाथ पे छोड़ दिया है, तो ऐसे केसेस में आपको 7 साल की सजा भुगतना पड़ सकता है और इसमें फाइन भी है, ठीक है. सो हियर द एक्सप्लेनेशन इज दिस सेक्शन इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द ट्रायल ऑफ द ऑफेंडर फॉर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड एज द केस मे बी इफ चाइल्ड die in consequence of exposure, okay. So this section is not entitled to prevent the trial of offender for the murder or culpable homicide as the case may be if the child die in consequence of exposure. Here the punishment is of 7 years, remember. So like section 318 is concealment of birth by secret disposal of dead body. Suppose you are hiding the birth of the child. Suppose कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चा पैदा हुआ घर में, वो बच्चा नहीं बच्ची है, वो लड़की है पैदा हुई, तो कई बार बर्थ को हाइड करता है और सीक्रेटली क्या होता है उसको डिस्पोज कर देते हैं उसके बॉडी को. सो दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड, ओके, इन्फेंटिसाइड टू प्रिवेंट इन्फेंटिसाइड एंड इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट कंसीलमेंट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड by secretly disposing of its body. Remember, you cannot secretly dispose any child like boy or either girl. You cannot, don't have a right to dispose of this child, okay. Basically in India from long term it happens like अगर घर में लड़की पैदा हुई तो उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है कई बार, तो इसमें एक सजा बहुत लंबा सजा है. और whoever by secretly worrying or otherwise disposing of the dead body of a child, whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine. Here the punishment is of 2 years or with fine, okay. So remember the like this section basically is intended to prevent infanticide, okay, and it is directed against the like a concealment of birth of that child and by secretly like disposing of a child. So here the punishment is of it. I think each and every section is clear now. Recap section 12 causing miscarriage.
causing miscarriage with consent, without consent, not in good faith. So here the punishment is of 3 year and it can be extended to 7 year under the case of quick unborn child. इसका फोटस मूवमेंट है, इधर वुमेन महिला को प्रिजम्पशन हो रहा है कि मूवमेंट है वहां पे. 313 में कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट कंसेंट, मिसकैरेज कर रहे हो बिना कंसेंट के, प्रेगनेंसी को टर्मिनेशन कर रहे हो, तो इस केसेज में आपको मतलब 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सजा मिलेगा. एंड 314 इज डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज. ओके, अब 314 में बात कर रहा है कि मिसकैरेज के साथ साथ महिला की मौत हो जाती है, तो उस केस में आपको 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का सजा भुगतना पड़ सकता है. 315 में क्या है, एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव, बच्चे को पैदा होने से रोकना या फिर पैदा होने के बाद उसको मार देना, तो 10 साल से और फाइन इसका होगा. 316 में क्या बात किया है, कॉजिंग डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड. जाहिर सी बात है, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड दैट इट मीन लाइक क्विक अनबॉर्न चाइल्ड है, वो मूवमेंट है फोटोस में लाइक 12 to 20 वीक का चाइल्ड है या फिर 12 वीक का चाइल्ड है. तो ऐसे केसेस में क्या है कि उसको अगर मारते तो ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट किया जाएगा और 10 साल का तो सजा मिलेगा ही. 317 में एक्सपोजर ऑफ अबंडिंग चाइल्ड, अगर 12 साल से नीचे का आपका बच्चा है या फिर आप उसके केयर टेकर हो, तो उसको आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते या फिर उसको एक्सपोजर नहीं कर सकते, अबेंडन नहीं कर सकते. नॉट हियर द डिस्पोज ऑफ, बट अबेंडन नहीं कर सकते, त्याग नहीं कर सकते, गिव अप नहीं कर सकते उसको. ठीक है, तो ऐसे में पनिशमेंट है यहाँ पे 7 ईयर का और विद फाइन. नाउ 318 कंसीलमेंट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, सीक्रेट डिस्पोजल, लाइक देयर इज कंसीलमेंट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड यू आर सीक्रेटली डिस्पोजिंग दैट चाइल्ड. सो हियर द पनिशमेंट इज ऑफ 2 years. It can be extended to 2 years with fine or with both. Okay. Thanks for watching. This is Deepak Nandan signing off.